Hello everyone. So last time we discussed about the sludge digestion processes, various stages involved in it, and the factors affecting the sludge digestion process. So today we will discuss about sludge digestion tanks, or you can say digesters. Okay. So here I am showing you the diagram of sludge digestion tank. Okay. Here is the diagram. So in the last lecture I told you about the hoppered portion. This is the hoppered portion I was telling about. Okay. Where the digested sludge is settled. Okay, this digested sludge has very much reduced moisture content. I already told you that the moisture content of this digested sludge is about one third of undigested sludge. Okay, one third of undigested sludge. Okay, so what are the various components of this? It is almost of cylindrical shape with the hoppered bottom, you can say conical bottom. Okay, so this is the circular dia. At the top it is of circular shape. Okay, so from here the sewage pipe, from here the raw sewage which is induced in this sludge digestion tank. When this is the different types of layers are formed here. This is supernatant liquid. It is formed between the digested sludge and this scum which is formed at the surface. I told you how this scum is formed. When the gas is entrapped in the sludge. Okay, what happens? This will make the sludge foamy, and this foam rises to the surface and form a scum. And this scum can be removed by using scum buckets or mechanical rackets. Okay, so here is the sludge which is entering in the sludge digestion tank, raw sludge from the sedimentation tank or primary sedimentation tank or secondary sedimentation tanks. Okay, so here at the top, a what type of floating type of roof is present. Okay, floating, this roof here is present, maybe of floating type or it is of fixed type. Okay, okay, sometimes a screw pump with an I already told you in the factors that the mixing and staging of the digested sludge is very important. For this purpose, a screw pump is provided so that uh, we can circulate the sludge from top to bottom and continuously stir it. Okay, so here it is not shown here the screw pump. Okay, so next comes to the this portion. This I told you that the during decomposition of the organic matter, some gases are produced like methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and inert gases like nitrogen. Okay, so these gases when rises to the surface, due to this a gas dome is provided from where these gases enter into this gas dome, and we can collect it from here. Okay, from here we can collect these gases and use it as fuel. Next comes here supernatant liquid. This layer is supernatant liquid. I already told you what is supernatant liquid. So supernatant liquid is a type of liquid in which where the solid organic matter is finely divided and liquefied in state. So it is not completely decomposed. So pipes are provided at different elevations here. See here the different pipes are provided. These pipes will take this supernatant liquid back to the raw sewage, or you can send raw sewage where it can again pass it through the secondary sedimentation tank, and then again when sewage is formed, and then again it is passed in these sludge digestion tanks. Okay, so what happens, I told you one thing, that the temperature is directly proportional to the rate of digestion. So in cold countries what happens, the temperature is low, so we have to provide some heating coils here. Okay, so that the hot water is circulated in order that the temperature inside the tank is maintained at optimum digestion temperature level. What optimum digestion temperature I told you in the last lecture? In the mesophilic zone I told you about 29 degrees Celsius, and in thermophilic I told you about 54 degrees Celsius. We generally love this zone of mesophilic temperature. Okay, so this is the sludge digesting pipe from where the with the help of this hydrostatic pressure which is above this digested sludge, it makes pressure on this digested sludge, and this pipe, from this pipe we can remove this digested sludge, and this digested sludge can be used as the irrigation, and the gases which is obtained from here can be used as fuel. Okay, okay, then now let's comes to the most important thing in these units is, what is this? Design considerations.
Okay, see here. Look, the design considerations which we considered in secondary sedimentation, oh sorry, in sludge digestion tanks are, what are these design considerations? Firstly, the dia of the, I told you that it is cylindrical in shape, so the dia of the top surface is about 3 to 12 meter. Okay, and the hoppered shape, that is this portion of the shape is at the slope of 1 is to 1 or 1 is to 3, means one horizontal or one vertical, or one horizontal or three vertical, you can assume any of these. Okay, the depth, how much depth of the tank generally varies between 6 meter. Okay, now how to determine the capacity of the digestion tank? Capacity, you can also check the volume of the digestion tank. So this capacity depends upon the various functions, which is sludge production, digestion period, degree of digestion required, loss of moisture, and conversion of organic matter. So from these, considering these different factors, we develop a formula which is V is equal to V1 plus V2 divided by 2 into T, where V is the volume of the digester, okay, where which we have to find, and V1 is the raw sludge added per day, which is we are adding per day how much sludge we are adding in the sludge digestion tank, and V2 is equivalent digested sludge produced per day on the completion of digestion. Okay, on production, we know that the digestion process takes long time, lot of months to compare. At the end, when it's how much time it takes to complete the full process of digestion, it is come, and how much volume is produced then during this period, it is known as V2. T is what? T is the digestion period. Okay, from here we can calculate capacity of the tank. So in numericals we will ask about calculate the design the sludge digestion tank. So you have to use these formulas. So in case we are not able to remove the digestive sludge regularly, so which happens during the monsoon seasons, in case of excess rains, in case of winters, we are not able to remove this digested sludge regularly. So what happens, we have to provide some separate space capacity for it. Okay, this separate capacity is called as monsoon storage. Okay, for this we have to multiply this equation, that is capacity. How can we obtain in this case the volume, or you can say capacity of the tank? Multiply this equation with V2 into T. V2 I already told you what is V2, and what is T. T is the, here T, capital T. What is T, capital T? Small t is the digestion time, okay, digestion period you can say, and capital T is the number of days for which the digested sludge is stored. Okay, from here you can calculate the capacity of during monsoons. Okay, now here we are considering that the change is linear throughout the digestion process. If the change is not linear throughout the digestion process, we have to use parabolic equations. Okay, so what type of this is? For this you have to remember this equation: V equal to V1 minus 2 by 3 V1 minus V2 and T, where these have the same meanings as we discussed in the earlier. Okay, this is without monsoon storage and this with monsoon storage. Okay, now let us discuss one numerical based on this, how to design this digestion tank. Okay, now let's, here is a given: design a digester tank for the primary sludge with the help of following data. Average flow is given to us, which is 20 million liters per day. Total suspended solids in raw sewage is also given, which is 300 milligram per liter. And third is moisture content of digested sludge, which is 85%. So assume any other data suitable you require. So for this you have to remember the design considerations. Okay, look at one thing here. Here it is given that the design is digestion tank for primary sludge. Okay, so from where we can obtain this primary sludge? In primary sedimentation tanks, not in secondary sedimentation tanks. Here we are talking about primary sedimentation sludge. Okay, so how we can proceed? Look, average sewage flow is given to us, which is 20 million liters per day. Okay, now total suspended solids is also given in raw sewage is 300. So we can calculate the mass of suspended solids in total सीवेज फ्लो. ओके, 20 मिलियंस में कितने होंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे. ठीक है, 300 इंटू 20, 300 के मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 10 और मिलियन का आ जाएगा 10 तो ये आ जाएगा 6000 kg per day. Okay, now in primary sedimentation tank, how much efficiency we can obtain?
while we studying the sedimentation tanks after the grid chambers, I told you that the efficiency, that number of percentage of solids which are removed in this primary sedimentation tanks is about 60 to 70%. Okay, 60 to 70%. So we assume 65%. You can assume any value according to you. Okay, I am assuming here 65%. So mass of solids removed in primary sedimentation, take 60% of this value and you obtain the how much solids which is removed in primary sedimentation tanks. Okay, now next come to the next point. Now let us assume that the fresh sewage has a moisture content of 95%. Okay, now the sludge which is producing in primary sedimentation tank is how much percentage is 95%. So how I told you in the last numericals when we discussed about the secondary sedimentation tanks, have we considered total 100. So here 5% of solids are present in 100 liters of wet sludge. So similarly we can do in 3900 kg per day में कितना present होगा, 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ओके, इनटू जितना हमारे पास, कितना है हमारे पास 3900. ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7800 kg ऑफ वेट स्लज पर डे. मीन्स कि यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि 3900 ऑफ kg ऑफ ड्राई सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन 7800,000 kg ऑफ वेट स्लज पर डे. ओके, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 3000 नहीं है, यहाँ पे 3900 है. ठीक है, यहाँ पे ठीक है. तो अब इसके बाद क्या करेंगे अब, ठीक है. अब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में एज्यूम किया था कि जो हमने हमारे पास वेट स्लज आ रही है उसकी हमने एज्यूम कर ली थी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 1.02. तो इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके ऊपर होती है, डेंसिटी ऑफ वेट स्लज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड की कितनी होती है 1000, तो यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1020 kg पर मीटर क्यूब. पिछली बार हमने निकाली थी टन्स पर मीटर क्यूब में. ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकल जाएगी, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, यूनिट वेट. पिछले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसके इक्वल होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से वॉल्यूम किसके आ जाएगी, वेट अपॉन यूनिट वेट क्या है, डेंसिटी. ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 76.4647 मीटर क्यूब पर डे. हमारे पास वॉल्यूम जो रॉ सीवेज का डेली प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉल्यूम आ गई. अब हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज एट 85% मॉइस्चर कंटेंट. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज कितना है 85%. ठीक है, 85% जो हमारे पास है वो है मॉइस्चर कंटेंट जो डाइजेस्टेड स्लज में प्रेजेंट है. तो हमें निकाल लेनी है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज V2 एट 85% मॉइस्चर कंटेंट किस फार्मूले से मिलेगी, इस फार्मूले से. ये फार्मूला हमें याद रखना है. ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1 100 माइनस P1. ये क्या है, P1 और P2 क्या है, परसेंटेज. ओके, तो ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई परसेंटेज अगर रिड्यूस हो रही हो तो उस केस में हम लगाते हैं. तो पहले हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट कितना था 95%. ठीक है, फिर अब कितना हो गया 85%. ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. तो पहले हमारे पास इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि जो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज होती है वो उसकी वॉल्यूम होती है 1/3 ऑफ किसके, अनडाइजेस्टेड स्लज के. ठीक है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पे ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है. तो इस फार्मूले में जब अप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास कितनी परसेंटेज थी 95, और जब से हमारे पास अब कितनी है 85. तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. V1 हमने पहले से निकाल रखा है यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज हमने निकाली हुई है. तो हमारे पास डाइजेस्टेड स्लज कितनी आ जाएगी, देखो इसको आप फार्मूले को सीधा ये भी लिख सकते थे V2/1/3, क्योंकि हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि जो डाइजेस्टेड स्लज की वॉल्यूम होती है वो 1/3 ऑफ होती है अनडाइजेस्टेड स्लज और यू कैन से रॉ स्लज की. ठीक है, तो सीधा ये फार्मूला यूज़ करके भी हम, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है ये इसको रहने दे सकते हो आप. ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके भी आप यहाँ से V1 की हमने वैल्यू निकाली हुई तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे. ओके, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास डाइजेशन पीरियड जो है वो 30 डेज़ का, ये हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो हमने पैराबोलिक मैंने बताया था जब चेंज पैराबोलिक हो रही हो. ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि चेंज कैसी हो रही है. ठीक है,
तो यहाँ से इस फार्मूले से आप कैपेसिटी निकाल लेंगे। अगर आपने पैराबोलिक नहीं निकालनी, अगर आपने लीनियरली वाला फार्मूला यूज़ करके निकालना है तो उसमें से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैराबोलिक वाला फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है लीनियरली तो आप जनरली पैराबोलिक ही यूज़ करना उसमें फार्मूला, ठीक है। तो वैल्यूज़ V1 V2 की हम सभी की वैल्यूज़ पता है, ठीक है। टी की वैल्यू भी हमें पता है, 30 डेज हमने एज्यूम कर ली तो वहाँ से हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1275 मीटर क्यूब हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी। अब डिज़ाइन कंसिडरेशन में मैंने बताया था कि इसकी डेप्थ डाइजेशन टैक्स की जनरली कितनी होती है, 6 मीटर या उससे ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली 6 मीटर, ठीक है। तो वहाँ से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एरिया इंटू यूनिट लेंथ अगर यूनिट डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या यूनिट्स आ जाएंगे, वॉल्यूम के यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, एरिया इंटू डेप्थ लिख सकते हैं इसको, तो वॉल्यूम यहाँ से एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, वी अपॉन डेप्थ, वॉल्यूम अपॉन डेप्थ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डाया किसके इक्वल होगा, डाया होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, एरिया इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो एरिया की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालने के तो हमारे पास 6.5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमने जो अपना डाइजेशन टैंक डिज़ाइन किया उसकी डेप्थ 6 मीटर है, डाया उसका 16.5 मीटर है और टोटल एरिया उसका है 212.5 मीटर्स के, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।